Hello friends, I'm Dr. Vivek. Today I am going to discuss about a new theory, that is new historicism and cultural materialism. This is the theory I'm going to discuss, new historicism and cultural materialism. Uh, Firstly, the term new historicism was coined by the American critic Stephen Greenblatt, whose book Renaissance Self-Fashioning from Moore to Shakespeare, written in 1980, is usually regarded as its beginning. दोस्तों सबसे पहले न्यू हिस्टोरिसिज्म कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, किसने कॉइन किया? ये टर्म जो कॉइन की गई थी न्यू हिस्टोरिसिज्म, ये की गई थी स्टीफन ग्रीनब्लाट के द्वारा, जो कि उसकी बुक रेनेसेंस सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोर टू शेक्सपियर, जो कि 1980 में लिखी गई, उससे शुरुआत होती है, इसकी बिगनिंग होती है। मोर टू शेक्सपियर, मोर, थॉमस मोर, यूटोपिया जिसने लिखा है, यहाँ से शुरुआत होती है। एक नाम है लुई मॉन्ट्रोस, ये कल्चरल मटेरियलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोट इज टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ द टेक्स्ट। हियर ही इज टॉकिंग अबाउट द टेक्सचुअलिटी ऑफ हिस्ट्री. Is he say that textuality of history is important, but is more important than historicity of the text. आप हिस्टोरिसिटी ऑफ द टेक्स्ट को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे कि टेक्स्ट की हिस्ट्री क्या है, उससे आप समझते हैं, उससे कोशिश करते हैं समझने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हिस्टोरिसिटी ऑफ द टेक्स्ट. Now, the difference between the new historicism and the old historicism. जब हम बात करते हैं new historicism की, तो ये क्वेश्चन रेज होता है कि what is old historicism? Old historicism focus on literary texts, whereas the new historicists focused on non-literary texts also. Parallel study they do. ओल्ड हिस्टोरिसिज्म जो है वो हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्टोरिसिटी की बात करते हैं इन लिटरेरी टेक्स्ट, बट जो डिफरेंस है, जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, वो नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को भी एनालाइज करते हैं. दे आल्सो टॉक अबाउट नहीं, they also talk about non-literary text also. So it might be a document, and it might be a paper, letter. They also analyze these non-literary texts also. So this is the difference. यही अंतर है कि वो लिटरेरी के अलावा नॉन लिटरेरी टेक्स्ट को भी एनालाइज करते हैं. उसमें दे डू पैरेलल स्टडी बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट. New historians accept Derrida's view that there is nothing outside the text, in the special sense that everything about the past is only available to us in textualized form. The aim is not to represent the past as it really was, but to present a new reality by recreating it. डेरिडा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे न्यू हिस्टोरिसिज्म. जैसे डेरिडा कहता है नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट. So they focus, new historicist focuses on not only the past, they focus on the past, but also to recreating the past in the present. They are recreating it. वो हिस्ट्री को इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री लिखनी है उन्हें, वो हिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में इसलिए जा रहे हैं, टेक्स्ट की हिस्ट्री में, राइटर की हिस्ट्री में, बैकग्राउंड में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उसको न्यू रियलिटीज लेके आए, नई नए कॉन्टेक्स्ट लेके आए, नई रियलिटी क्रिएट कर सकें. दैट इज देयर एम.
Cultural materialist accepts Foucault's idea of social structures as determined by dominant discursive practices. Discursive practices एक बहुत important concept है कि मिशेल फूको द्वारा दिया गया है. Discursive means set of beliefs, discussions, prominent practices, you can say. So the cultural materialists are influenced by Michel Foucault. Now, with this new historicism, there is also a very important context called cultural materialism. It's very similar to new historicism, but we have to understand this cultural materialism. What is cultural materialism? The British critic Graham Holderness describes cultural materialism as a politicized form of historiography. They are this is a more politicized form of historiography. The term cultural materialism was made prominent in 1985 when it was used by Jonathan Dollimore and Alan Sinfield as the subtitle of their edited collection of essays, Political Shakespeare. कल्चरल मटेरियलिज्म 1985 के बाद ये सीन में आता है और जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिनफील्ड दो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं इसके उन्होंने एक बुक लिखी थी एसेज कलेक्शन ऑफ एसेज इट वाज पॉलिटिकल शेक्सपियर अब इस बुक में वो कल्चरल मटेरियलिज्म की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं basically they say that cultural materialism is based on the context, right? And what kind of context it is a context of historical context. They see texts in the historical context, the theoretical context, political commitments, and textual analysis. As the new critic focuses on the text, they also focuses on the text also along with the other things. So context is here more important here in cultural materialism. Cultural materialists are influenced by the British left-wing critic Raymond William. They are more influenced by Raymond William. Cultural materialism particularly involves using the past to read the present. They are reading the past to read the present, to understand the present. Now, what is the difference between cultural materialism and new historicism? New historicist situates the literary text in a political situation of its own day, while the cultural materialist situates it within that of ours, means lived experience. जो अंतर है बेसिकली कल्चरल मटेरियलिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म में वही अंतर है कि ये पर्टिकुलर टाइम का पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस देखते हैं डोमिनेंस प्रैक्टिसेस देखते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म वाले डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस देखते हैं पॉलिटिकल सिचुएशंस देखते हैं उस टाइम की उस हिस्ट्री के टाइम की देखते हैं बाकी जबकि मटेरियलिस्ट कल्चरल मटेरियलिस्ट जो दे फोकसेस ऑन द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस on the present. They focuses on their lived experiences. ठीक है खुद के लाइव एक्सपीरियंसेस को वो फोकस करते हैं उन पर्टिकुलर सिचुएशन में वो सिचुएट करते हैं अपने आप को न्यू हिस्टोरिसिस्ट was much influenced by Foucault, as I have already said, who sees discursive practices as frequently reinforcement of dominant ideology. डोमिनेंट आइडियोलॉजी की बात करते हैं न्यू हिस्टोरिसिस्ट हेजेमोनिक स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो डोमिनेंट होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा उसकी कल्चर उसकी लाइफ ट्रेडिशंस वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा cultural materialism on the other hand owes much to Raymond Williams who sees structures of feeling खुद की structures of feeling lived experiences
can say lived experiences as the seeds from which grows resistance to the dominant ideology. It sees how it's growing, it's resisting, its changes is coming from where they see the structures of feeling, the lived experiences. So they are focused on the lived experiences, structures of feeling, whereas new stoicism focuses on the dominant ideology, right? So this is the difference between the cultural materialism and new stoicism. This is all about new historicism and cultural materialism. आई होप मैं आपको सिंपल शब्दों में इजी तरीके से कुछ बता पाया हूँ, समझा पाया हूँगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग. थैंक्स फॉर लिसनिंग.